You're on mute. Yes, you're audible. I'm asking, what is the method you're using? So we take M1 into M2 is equal to -1. So Perfect. basically, so reciprocate the gradient and then minus sign आ जाता है. Okay. So, okay, let me just assume a situation. Hmm. This is your Cartesian coordinate. You have a Hmm. line segment like this. You calculate its gradient by your usual trick of y2 minus y1 upon x2 X2 minus minus X1. x1, because you know 2 points on it, right? And there is another line like this. Gradient is m2, and you again do the same thing. Maybe the points are different. Y3 minus y2 upon, because this is common, upon x3 minus x2. X2. Now the decision whether these are parallel or perpendicular lines. For perpendicular lines, for perpendicular lines, okay, m1 multiply by m2 M2 is equal to, minus minus. okay, for parallel lines, m1 is equal to m2, because they're parallel, Because their the gradient is slope is same. same. Hmm. That is Yeah. correct. Exactly. Okay. Now let's pick up a question and see whether why are you stuck? Because your concept seems to be very clear. I mean, your concept is clear. You're right. You know the Yeah. concept, not that you don't know. So Hmm. why is that you're not able to solve a question? Let me just see. Or are these the tough ones? Some special type of questions being given in your school, or Like book में ऐसे लिखा है A is 2, -3, let B me is open. -2, T is Uh, perpendicular to a line with gradient 1/4. okay, got it. Page number you said? 275. Understood. Should not be tough. I think there'll be one step you might be missing, but your concept is very clear. How to use the concept in a certain situation. So the easier part is just to calculate the M1, M2, multiply them, and boom, you decide whether they are parallel or perpendicular, right? All right. So let me just, I'm on the page 275 Five. now. Okay. Tell me the question number. Example 14th, or is it an unsolved question? I'm on I'm on the page 275. Which one? Sorry, yeah. This question I'm having trouble with question 6, 7, 8, and 9. Okay, got it. So we can do any one part of them, right? Yeah, yeah. Okay, let me just pick up. Did you try the solved question? Yes, I looked at it, but Uh, मुझे समझ नहीं आया कि ये t +3 equals to -1. So, oh, yeah, no I got worries. it. I got it. No worries. Hmm. No worries. So the first step is always in these questions is a good strategy to draw a diagram. Okay. Hmm. Unless you become so proficient that you don't have to depend on a diagram. You just Hmm. like out of nowhere, you can just do the question. Okay. Okay. Let me tell you what is going on. So now let's draw a Cartesian coordinate. Hmm. Okay. So this is your coordinate axis. Yeah. Okay. Now find T, which means the y coordinate of C. Okay. Hmm. Hmm. And it is, um, if you join these 2 points, C and D, so the D is -1. Okay. Let's say this is -1, and this is -3. So this is -1, -3, right? Yes. That's my D. Hmm.
and God knows 1. So x is 1. I really don't know where is the point, what is the point t, Okay. Hmm. because that is what I need to find out, right? The question is to find t. So let me hypothetically say that the point t lies somewhere here. So let me hypothetically call this point as C and say it is 1 comma t. Hmm. And then what I do is I join these 2 points. Sorry, I will use a line instead. सीधी तो मुझसे बनेगी नहीं, but let me do one thing. Let me just pick this up and join. Okay. Now, this line CD is perpendicular to a line with gradient 2. So gradient 2 means this line has some slope of 2. Let's say the line with gradient 2 looks like this. Because Hmm. it says it is perpendicular. Yes. So I drew a Perpendicular. perpendicular. Okay. ठीक है? Hmm. So I know, so this is my second line. What is its gradient? 2. 2. This is my first line. What is its gradient? y2 Hmm. minus y1 Y1 by x2 minus x1. upon x2 minus x1. So on. Hmm. If I know 2 lines and I know they're perpendicular, I know their gradients, I know the rule. Since these 2 lines are perpendicular, m1, m2 is equal to minus 1. So Hmm. t plus 3 divided by 2 multiply by 2 is equal to minus 1. Hmm. So t plus 3 is equal to minus 1 and t is equal to minus 4. So I'm able to find the y coordinate of the second line, or Yes. first line itself. Tell me what was not clear to you. I think I just used your logic. I used Hmm. y2 Yeah. minus y1 upon x2 minus, and I just drew the diagram. Yeah. I knew what is a condition for perpendicularity. The gradients, respective gradients have to be multiplied and must be 1, and which is what I did. Hmm. Just analyze it. Tell me, where do you find it difficult to understand? Any particular You're right. part which you think is impossible, it's too tough, let me know. अभी तो no, not no part अभी right now. Clear, right? Yes. Okay. Straightforward, right? No brainer. No, Nothing, no. Hmm. nothing exceptional also. Okay. Let's do one thing. Now that you understand this question, let's pick up sixth. Yeah. And looking at the answer above, you do sixth A. Just copy. As to whatever I did, you do the same thing for sixth A. Let me see where is that you get struck. Okay. So M1 equals to A by 3 minus 1 into 3 minus 3 by 1. Now what should I do?
Okay, let me see till what you've done. So you have taken this is a slope of AB. Yes. Let me say this is your slope of AB. Okay, A, so this is your slope of AB. You've done A minus 3 upon 3 minus 1. Perfect. So A minus 3, keep it like this. Okay, A hmm, my there is just calculate the slope first. Okay, so slope is correct. hmm, Don't do this A step. minus 3. Don't do this step. Wait, Okay. wait, 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 Hmm, wait. So I calculated them separately. hmm, Stop. okay. Now, now let's go step by step. Okay, so slope of AB, it is parallel to another line. So I will just do whatever is in the book. Okay. The second line gradient is given to be 1 by 3. What is the So condition? Parallel. that's the galat question. We're doing the part A. It's parallel to 3. Okay. Hmm, ठीक है मैं 3 कर देता हूँ इसको. This is what you mean, right? 3. yeah. तो ये 3 हो गया. So these are Hmm, parallel, right? yeah. What is the condition for parallel we read in theory just now? ऊपर हमने Gradient क्या is the लिखा था? same. Parallel line M1 should have equals M2. same gradient. Why? Gradient. They look like this. Hmm, Parallel. Maybe hmm, this. They look like this. hmm. So same gradient, same slant, as if Yes. two houses, two staircases having same Hmm, slant in the same direction. Okay. So yes. for parallel, Hmm, M1 is equal to M2. So A minus 3 upon 2 is equal to 3. So A minus 3 is equal to 6. And I just have equated them. One. Okay. So A is equal to, got it? Yes. So you, way to solve, first gradient, second gradient, rule, whatever rule, perpendicular or parallel, then substitute the values in the rule. Hmm, Substituting the values, substituting the values of M1 and M2 in parallel condition. yeah. M1 की वैल्यू भी डाली, M2 की भी Hmm, वैल्यू डाली, कंडीशन में आंसर निकाल लिया. Now do hmm. question number B. Try it. Okay. Let's see whether you can do in a step manner. Hmm. Every step understood. कि मैं क्या कर रहा हूं. Don't do Okay. B, do C. Okay. See. हाँ, C करो. Okay. So M1 equals to 5 minus A by A minus 3. Yeah. This is the gradient Okay. M1. Of first line segment. Hmm. Then second grade is given. See the Hmm. condition, is So it parallel or perpendicular? equals to 1 by 3. Right. So now I just multiply. You know the rule. Use your own rule. Yeah, M1 equals हवा. M बाहर बहुत हवा आती है ना, so M1 okay, so now I multiply A minus 3 with 1 and 5 minus A with 3. Wait. Cross multiply. Yeah. Huh. Cross multiplication. ठीक है? Hmm. So it'll Why just why make is this? Why have you written what is this? Wait, just give me 1 second. What is this? This step is not clear to me. So you calculate M. the first one. What is this? Hmm. This is the M2, this line of the second, the gradient of the second line, no? No, no. But why are you multiplying it?
The second gradient is 1 by 3 or minus 2 by 5. Which one are you doing? 1/3. I think you picked up the wrong one. I think you did C. Yeah, we have to do B. C, C. You have taken C, right? Hmm. To how have you have used C? Oh yeah, I picked the wrong one. So M2 is how much? Wait. M2 is Oh, -2/5. so just write it. Hmm. -2/5. Do step by step. M1 Okay. separate, M2 separate. Now, right? Hmm. Since these are parallel, remove your cursor. Remove your pen. Yes, Since I these removed. are I removed. parallel lines, M1 is equal to, and this looks like M M2. square. You have to write it Hmm. below. It's a subscript. It Okay. is not M square. Hmm. It is M2. Okay. Now equate them. Equation number 1, equation number 2. 1 is equal to 2. Now substitute the values in this. On the left hand side, write this. On the right hand Hmm. side, write this. Okay. So Tell me if it is not clear in your mind. We are doing the same three thing. Writing M1 separately, M2 separately, everything. -3 equals to -2/5. Hmm. Hmm. So now I cross multiply. That is correct. So A minus Do it, do it. A Don't plus speak. 6. No, no, start doing it. Please don't speak. Hmm. Start doing it. 5 multiplied by 5 minus A minus 2 multiplied by A minus 3. Bracket is there. 25. Right. Is equal to, take A minus 3 on the other side. Cross Oh, multiplied. okay. Yeah, yeah, is equal to -2A plus 6. Hmm. So now I take the terms together. Right. Like So, A's together hmm. and numbers So, together. So so, minus 5 is bigger, right? So take it on the other hmm. side. Okay, so, This will make it 3A. So 5A minus 2A. okay. Do it yourself. Now you're doing algebra. Hmm. Basic algebra. Equals to -25 plus 6. That is correct. Which is so 3 equals to 19. Minus 19. So yeah, sorry, A equals to -19/3. What you were doing is you were writing M2. Look at your Hmm. M2. You Hmm. were straight away multiplying it with 1 by 3, the slope. Yeah. M2, please Hmm. write equal to minus 2 by 5. Okay. You Got were it. taking product of two gradients for M2. M2 is not a Hmm. product. M2 is a gradient. Got it. Got it. Okay. Let's see. No worries. It will get, get in your brain finally. Yes. Let's see if you can. I'll I'll just close the door because Storm? yes, there's a storm outside. There is a storm. Hmm. Okay. Now the second variety. Not the variety actually, but now the condition changes. The condition is Hmm. now M1, M2 is equal to -1, which is perpendicular, right?
So do one question from 7th. Let me just paste it. Let me paste it and ask you to attempt any one of these. I'm going to the second page. And you will do now any one of these. Okay, just do. So try B part. B part. Yeah. Okay. Same steps, everything is same. Condition only changes. You don't have M1 is equal to M2 now. You have M1 into M2 is equal to -1. M1 equals to सही है 4 minus 2 by 1 minus t, which equals to 6 by 1 minus t, and M2 equals to 2 by 3, which equals to minus 3 by 2, because you reciprocated now. Yes. Wait, let me see what you're doing. Wait. Uncle, You have can I done. just go open the door? Somebody's हाँ at the door. please go. काका जी होगी सर। हाँ जी. Hello. Yes, I'm back. I have to close all the doors now because हाँ please, बहुत no हवा problem. चल रही कोई बात है। नहीं. Now my question to you is, are you back? Yes, yes. My question to you is, look at the way I did. I just stopped here. I never did any reciprocal. Look at my answer on the top. Should I take you there? Go to previous page. Go to previous page and let me show you my solution. What did I do? I calculated, my steps were, let's calculate M1 first. Okay. And which is what I did. I calculated M1. This is my M1. Yes. Then I know M2. Yeah. Then I said, if these are perpendicular, M1, M2 is equal to -1. Then I substituted the values of M1 and M2 in this formula and put it equal to -1. Now let me show you what you're doing. So I'm going back to, you calculated M1. Same. Yes. You calculated M2. Did you write? I don't know how your 2 by 3 became -3 by 2. I told you, now write the rule.
For perpendicular, m1 M1 into m2 into is equal to M2 -1. -1. Okay, this is the Hmm. concept being used. Yes. Substitute m1, m2 in this. You have found Okay. m1, you have found Hmm. m2. This was given. Yes. This you calculated yourself Hmm. from the given information using Hmm. y2 minus y1 upon x2 For minus x1. X2 minus X. Don't do Yes. this step of reciprocal, not required at this stage. No, Keep not it required. simple. Okay. Just know Okay. m1 and m2 independently and put it in these two in the formula. Put m1 here and put m2 here. Multiply them and put it equal to -1. Do it Okay. now. We will So, discuss that reciprocal thing after this. hmm. So now, Substituting so the values of m1 and m2 in the yes. concept. Or let's say in Hmm. equation number A. Substituting Values. the values of m1 and m2 in A. Hmm. Okay. Substitute. So now 6 by t minus 1 minus t Right. into 2 by 3 equals -1. Right. Okay, so now cross multiply. So 6 into 3, which is 18. So 18 equals to 2 minus 2t, which equals to -1. Right. So 18 comes here and 2 also comes here. So it turns minus minus. So minus 19. So I mean 2t equals to -19. So t equals to -19 by 2. How did you get 18? 18, I have 6 into 3 now. नहीं कहाँ पे है ऊपर तो न्यूमरेटर्स will get added ना 6 into 2 Also 6 into 2. Okay. obviously if Oh you yeah, have yeah. multiplication the numerators get added Hmm. Yes. and So denominators get the added. So this is 12. okay. Yeah. Okay. And then there'll be 3 minus 3t, Ah, na? ah, ah. Yes. 3t. And this got cross So, multiplied, right? So hmm, remove your 1. There is no 1 left now because you hmm, cross multiplied. okay. First you multiplied these and then you took it here. Hmm, ऊपर आ गए ना ये भी ये वाली hmm. ब्रैकेट्स भी ऊपर आ गई दोनों Yes. multiply okay 3 minus 3t bana and multiply by Hmm, -1 the only thing you should have done is yeah multiply by so let me just rewrite it neatly so that you're clear so this is what you have done you have done 12 hmm. divided by 3 minus 3t is equal to -1 -1. 12 is equal to -3 cross multiply Yeah. plus 3t 3t. Hmm. Yeah. So, so 12 minus 3 is equal to 3t. no when No? 3 will come on this side it will become Will 12 become plus 3 plus. Yes. Yeah. Which is 15 is equal to 3t. right So t equals to 15 by 3. So t is equal to 5.
Is this correct, uncle? अरे यार इतना तो आता ही होगा 15 divided by 3 is 5. Hmm. Yes, you got T. But are you clear on the steps? I think so. I'll do one more question. Do please be please have an algorithm in your mind. These are the Hmm. steps I will do. Please don't do randomly inverse, reciprocal, nothing. Hmm. Okay. Keep it in your mind. I'm going to do M1, then M2, then I will write the condition, put the values of M1, M2, find the value. खत्म. Hmm. वो रेसिप्रोकल का फंडा भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं Okay. करने की. Okay. I will tell you where it comes from understanding point of view. Both Hmm. methods are right. Your method is also right, but the way you were doing it would give you wrong results. Hmm. Not that you are. Okay. I will explain you what you were doing. So don't worry. But follow this method. This Hmm. is easier to understand. Yes. No. Now I'll do question A. Anyone which you like. Part question 7, part A. ठीक है. I leave it to your judgment. Okay. Whichever you want to do. Should I paste it? Yes, yes, please. Okay. Let me just paste it for you so that you can just copy and बाहर बहुत जोर से स्टॉर्म आ रहा है. हाँ वो तो expected था. हम्म. आप वापस घर आ Extreme गए heat हो हो गई अब? ना. हाँ. वापस आ गए हो? हाँ I'm back. I'm ओके. going back. ओके. Day after tomorrow I'll be back. Right. So question number. Yeah. So you can try. ये वही क्वेश्चन है, सारे सेम ही है. ठीक है. I'm just pasting the question so that it's easier for you to copy. Okay. आ गया. लोड हो रहा होगा. यस. Okay. Try मैं anyone. बस ये अ, पुरानी वर्किंग का आई टुक अ स्क्रीनशॉट ताकि इफ आई एम कंफ्यूज मैं आई जस्ट लुक एट इट. Don't worry. So I will send you a link where you can see your recorded classes. Anytime you have a ओह. difficulty, you can go back and check your recording. ओके. ओके. Okay, so you ओके. don't have to write to need to write anything. You can just go back to your class and check it. ओके. सो which one should I do now? But anyone you like, यार कोई भी पसंद आ रहा है. But I want to see your working, which is step by step working. Show me your step by step neat working now. ओके.
Uncle, I'm done. Check now. Hmm. So this is neat. Which one are you doing? Part number? Part A, question Part. 8, part Okay. A. So AB, you've calculated AB. Hmm. Okay. So you are saying 0 minus 4 upon minus 1. Agreed. Then you're calculating CD. Okay. So you're calculating CD. Where is CD calculation? Here, right, here. Okay. So you're C. calculating Hmm. CD Hmm. minus 1 minus 3 T minus 6. Agreed. So this is your step number 1 calculated. So you have done it like this. Step number 2, you calculate M2. Then Hmm. since these are parallel, okay, So M1 equals M2. okay. Since AB and CD are parallel, you wrote this. Then you Hmm. said I already calculated M1 and And M2. I am putting M2. yes, ठीक है, बढ़िया. ठीक जस्ट भी ये ठीक है ये. लिखा क्या है यार? टी को टी लिखो ना भाई. हाँ सॉरी सॉरी गलत हो This गया is giving me थोड़ा. an impression of some Jesus Christ sign. थोड़ा डिफिकल्ट बिकॉज You're not मैं used to ऐसे writing on लिखता this. या. I know. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई. गुड. दिस इज नीट राइट. एलिगेंट, एकदम यस. क्लियर है पढ़ने में. जस्ट बी वेरी अब मैं केयरफुल. बस इसको हाँ ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं. करो. लेट मी सी योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो बिकॉज यू डन एरर्स इन दैट ऑल्सो. 2 into 6 and 1 into -4. हाँ जी. Okay. 2 into 6 which is 12 t. So uncle, can you see? या डोंट वरी, जस्ट डू इट. चेक करता हूँ मैं. I did it. अभी करा नहीं है कुछ. कर तो लिख तो दिया. अरे यहाँ नहीं आया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ओ. दिया. हाँ जी. So 2 into t-6 and दिख one नहीं रहा into कहीं पे. minus four. कांट सी. और मैंने वेयर हैव यू अभी तो डन? लिखा था. वेट, मैं फिर से लिखता हूँ. हाँ मुझे दिख नहीं रहा कहीं. लेकिन मुझे मेरा कर्सर नहीं दिख रहा. वेट. दिस इज वेयर यू आर राइट. यस. राइट है. ओके. आपको दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा मुझे. वेट. मुझे भी. मतलब मैं लिख रहा हूँ बट मुझे कर्सर नहीं दिख रहा है. यू टू राइट हेयर ना, इधर. या मैं वही लिख रहा हूँ बट कर्सर बोर्ड उस पे नहीं दिख रहा. ओ ऊपर है, ऊपर नीचे लाओ. ब्रिंग इट डाउन. हाँ जी. ब्रिंग इट डाउन. मूव इट. मूव इट अ बिट, यू विल सी फॉर योरसेल्फ. आगे आ ये गया. हाँ ठीक है. ठीक है. हम्म. योर हेयर. हम्म. आ गया. वो आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, हाथ का कंट्रोल और कर्सर कहाँ पे है. हम्म. आगे अब लिखो. राइट डाउन. आ जाएगा अब. नहीं लिख रहा. हम्म. लिख ही नहीं रहा. टेक आउट योर सेल्स और व्हाट आई टोल्ड यू, मेटल के ऊपर लगाओ उसको. हाँ चार्ज जमा हो लगाता गया हूँ. उसके ऊपर. डिस्चार्ज द चार्ज. या. Put हम्म. it on some metallic surface. Just touch it. पेपर चार्ज जमा हो जाता है फिर वो लिखने नहीं देगा. हो गया. चार्ज ठीक चार्ज है. कर दिया. यस इट्स वर्किंग. ओके. हम्म.
हो गया अंकल। हेलो। हाँ जी, या अंकल खो गया। लेट मी सी। 2t - 12, 2t is equal to -12, सही है। Tell me any doubts left in your mind on steps। नो नो नथिंग। बहुत क्लीन एंड नीट मेथड है, मतलब हम्म ऐसे लिखते जाओ, अपने आप आंसर आएगा ही आएगा। यू हम्म। आर जो गोइंग अगर टू आप गेट एन वो आंसर। थोड़ा स्क्रिबल करते हो तो तब खुद वापस भी कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, एकदम बस स्टेप में दिमाग में हम्म लॉजिक बना लो, मैं तो यही स्टेप लूंगा बस, खत्म। हम्म। ओके, व्हाट एल्स? और कोई डिफिकल्टी? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज व्हाट आई विल लेट यू डू। क्वेश्चन हम्म। नंबर 9 इज अ फिगर क्वेश्चन, राइट? यस। परपेंडिकुलर दिख रहा है, 90 डिग्री है। या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वी विल यूज द सेम ट्रिक, बिकॉज यहाँ पे हमें फिगर से इंफॉर्मेशन निकालनी है। उन्होंने हम्म। पॉइंट्स जो हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पॉइंट्स ऑफ द हाँ सो। लाइन की y2 - y1, हम्म हमें y2 वगैरह हमें उसने फिगर में ही दे दिया। तो हम्म वहीं से हम चोरी कर लेते हैं। वी विल रीड द फिगर एंड गेट द पॉइंट्स वी नीड टू कैलकुलेट द हम्म। gradients of two lines. We have two lines. One is this, the other is this. Now use those points and start writing the gradients. First, label the lines. Okay. The first thing I do so that there is no confusion in my mind is I will call this line number 1 हम्म। and I will call this line number 2. First, I will write the gradient of, लाइन नंबर 1। yes, so write it down. 1 ओके। L1. इसका नाम हम्म M1 रख रहा हूं मैं, is equal to, I हम्म know 2 points on it. हम्म। I can write the gradient easily. 6 4, 6 9। incidentally lies on both the lines, if you notice. 4, 6. Oh, It's a point of intersection. It lies on both the lines. yeah, so we'll take Obviously, 4, 6 हाँ, for अगर that also. Yeah. परपेंडिकुलर हो तो फिर ये वाला पॉइंट तो Hmm. भाई इसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी है ना। Yeah, yeah. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि ठीक है, Hmm. सही है। अब हम फिगर देख के वही चीज कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ फिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स अ एक्स्ट्रा स्टेप वी आर डूइंग। Yes. ठीक है, Hmm. सही है। 3 5s अब are, M2। 3 4s are Yeah. 5 by। 4। ठीक है, Hmm. M1 आ गया। नाउ Hmm. ग्रेडियंट ऑफ M2। line 2, Yes, line। which is M2. The name is M2, Hmm. line का नाम तो L2 है। So now Yes। you write M2। Hmm. It is K minus 6। ठीक है, agreed, Hmm. agreed है। K minus 6 by 14 minus 4 10। ठीक है, equals to K minus 6 by 10। now look at the, देखो क्वेश्चन में पैरेलल हैं दोनों ग्रेडियंट या परपेंडिकुलर वाले दिया नहीं। शे फिगर में क्या दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है? Perpendicular। Simple. Apply your M. So this is what I write it to explain the teacher. Assuming teacher is a Hmm. dumb teacher, doesn't know anything, right? Hmm. Hmm. From the figure, from the figure, Hmm. one can see that Hmm. lines L1 and L2 are perpendicular. Therefore, Hmm. M1 multiplied by M2 is equal to -1. Substitute Hmm. the values you calculated above in this expression. So you have one Okay। expression which is this,
हम्म। द I by 4 सेकेंड and k इज minus. दिस, इनकी वैल्यू डालो। Okay. So 5 by 4 into k minus 6 by 10 यस, ये equals स्टेप तो हमें पता minus ही है ना, 1. पहले ही कर चुके हैं हम। सिर्फ हम्म हमने फर्क ये करा हमने कि वो वी यूज द डायग्राम टू राइट द वैल्यूज, हम्म and we use the diagram to decide whether it is parallel or या perpendicular. They did बट not tell हाँ, us. That's all. अब हम Otherwise तो सही नहीं है। तो ना अब हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हाँ भाई, क्रॉस जो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई करो करेंगे। और खत्म करो यार। ये क्रॉस 40 करूं है, या फिर? हाँ। ठीक है, -1 से कर दो इसको। ये ब्रैकेट्स हैं तो इनको हम्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये 40 हो जाएगा नीचे। हाँ। 40 इंटू -1 हो जाएगा क्रॉस करने से, तो इस तरफ -40 आ जाएगा। हम्म और इसको खोल लो, 5k और 5 माइनस, सो फाइव फाइव के के माइनस माइनस थर्टी 30. हम्म तो 5k इक्वल्स टू 5k minus 30 equals to minus 40. प्रेस, लिखो। 40, so 5k equals to minus 40 plus 30. 5k equals to minus 10, so k equals to minus 10 divided by 5 divided by 5, so k equals to भाई minus 25 नहीं 2. है, 5 है। हाँ हाँ सॉरी, वो गलत 2 लिख दिया था तो फिर मैंने उसको क्रॉस करने की कोशिश करी। k इज इक्वल टू माइनस, हम्म आंसर -2. आ गया। यस। व्हाट इज द डाउट? अब क्लियर हो गया। आया ना समझ वन में? डाउट। हाँ हाँ वन डाउट वन। हाँ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है तो हम करते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर बस, और उसको पोजीशन स्विच कर देते हैं। डिनोमिनेटर को उस साइड ले जाते हैं, हाँ। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड के। हम्म ओके, लेट मी शो यू। ओके, जस्ट टू क्लियर योर डाउट, सो सपोजिंगली इट इज a अपॉन b इज हम्म इक्वल टू c अपॉन d। यस। Simply speaking, हम्म b gets multiplied by c, which this is a हम्म denominator, हम्म this is a numerator। yeah, तो एक दूसरे का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये हम्म डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो हम्म a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई c बाय multiplied d। by d. d, ओके। now let me write it। So calculate the value of x, x minus 1 by 2 is हम्म equal to uh, x minus 2 upon 6। Find हम्म x using the method of cross multiplication। ओके सो 2x minus 4 equals to 6x minus 6. So now you take the terms. Yeah. X So now you together, put all x's this. together। Hmm. So 6 minus 2 equals to 6x minus 2x. So 4 equals to 4x. So x equals to 1. Perfect। Okay, got it. Okay, Hmm. one more for practice, Yes. one more for practice। uh, 7k minus 4 upon Hmm. 2k minus 4, so we calculated gradients। So Hmm. this was one gradient, Hmm. मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड ग्रेडियंट, तो ये एक लाइन का ग्रेडियंट था y2 M1. माइनस वन, Yeah. ठीक है, वो आ गया, ठीक है। Hmm. दूसरी लाइन का ग्रेडियंट था 5/3, ये m1 है, ये Hmm. m2 है, और ये पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर है, और इसीलिए इनका प्रोडक्ट -1 है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। Okay. हमें तो यही आता है So, ना, के निकालना है ऐसे। हाँ जी।
तो मैंने इसको हम्म रियल क्वेश्चन बना दिया कि परपेंडिकुलर है। तो 21k -12 equals to 10k -20 equals to -1. So 21k you will switch. So will be. Okay, so you, hey, hold on, wait. Hmm. How have you done this? Explain me your steps. क्या So क्रॉस I मल्टीप्लाई multiply करा है? 7x -4 into 3 3 क्यों भाई? because. रूल इज, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है उसके लिए दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। इसके और इसके बीच में इक्वल टू का साइन का है। ओ ये तो मुझे कभी सिखाया ही नहीं पूरी लाइफ में। ओ भाई, ये तो एक ही, ये तो ए बाई बी है दोनों खुद ही। भाई ये क्रॉस ओके। मल्टीप्लाई, पहले ऐसी सिचुएशन में ये न्यूमरेटर और न्यूमरेटर, पहले डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ करो। नो। ये इक्वल टू ओकर। नहीं है यहाँ पे। ठीक क्रॉस है, अगर इक्वल मल्टीप्लिकेशन टू के लिए, होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में ओके करेंगे ना, ओके यहाँ ठीक है। इक्वल टू आएगा ना। हम्म। पहले पहले ओपन द ब्रैकेट एंड गॉट इट मल्टीप्लाई गॉट इट। न्यूमरेटर्स। ऊपर तो सो मल्टीप्लिकेशन का साइन है भाई यार, ये कहाँ हाँ। दिखा रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अभी? हम्म। हाँ जी, थर्टी गॉट फाइव, इट फाइव गॉट इट। सेवन आर 35। यस, सॉरी सॉरी। डोंट टेल मी ये भी नहीं पता था। नहीं ये नहीं पता होना पता चाहिए था। था। ओके 35K। हाँ जी। 35k ठीक है, माइनस 20। 20 हाँ जी, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। हम्म। एक्सप्रेशन है ना एक, एक हाँ जी। एक्सप्रेशन है। व्हाट इज दिस नेक्स्ट ब्रैकेट ऑल अबाउट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी नहीं ना, 2k अभी नॉर्मल, नो, हाँ सॉरी नॉर्मल मल्ट। नॉर्मल डिनोमिनेटर में। ये ऊपर ओके कैसे ओके चढ़ गया? नॉर्मल। वाई वाई ऑन द टॉप? ओके उसको ऊपर गॉट क्यों लाया अपने मन से भाई? डिनोमिनेटर विल रिमेन डिनोमिनेटर। इट गॉट इट गॉट इफ इट आई टेल गॉट यू इट। दैट यू आर डूइंग 2/3 into 5/3, हम्म। then 2 5s are 10 and 3 3s are 9। यस। वही तो करने को बोल रहा हूँ मैं, नीचे रखो ना उसको अभी। ओके। हाँ, आप इक्वल, अब आ गया इक्वल टू। हम्म अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 के नीचे तो 1 नहीं होगा, हम्म। -1/1 करो। अब करेंगे सो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। करो। सो 35 1 से के तो कुछ असर होने नहीं माइनस वाला, 20 रिमेन्स द सेम। हाँ जी। हम्म। 6k +12 हो जाएगा बस, है ना? वेट, ऊपर -1 है तो हाँ जी। -6 हो जाएगा पहले तो। यस। -1 हैज द पावर टू रिवर्स ना। हाँ हाँ जी अब या। सही है, अब सही है। हम्म। योर अलजेब्रा इज नॉट ग्रेट। यस, आई हैव टू, अब मैं I'm gonna ठीक practice. है, I'll correct you every time I get an opportunity, I will correct you। हम्म। तो ये बन गया भाई। यस। सो कम 35k my +6k equals to 20 plus 12, which is राइट, equal to 12। ओके, 35 plus 6, which is 41। 41. 41k equals to 32. So k equals to 41 by आंसर, 32. आंसर। Yes. अब समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करनी है, हम्म। यहाँ नहीं करनी होती भाई, मर समझ आ जाओगे। गया, यस। और समझ आ भाई ये गया, सिर्फ हाँ। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर है, और ये डिनोमिनेटर हम्म। और डिनोमिनेटर है। ठीक है ठीक जब है ठीक है। एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा पूरा पूरा, फिर शुरू करना हम्म। जब इक्वल टू के साथ हो। ओके। ओके, हम्म। चलो, आई कीप ऑन कैचिंग यू ऑन बेसिक्स। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। अब ये तो हो गया। सो हाँ नाउ आई हैड दिस, एक वर्कशीट थी हाँ, ले आओ। जो हमें उसकी पीडीएफ बनाई है? प्रैक्टिस वर्कशीट दी है। ठीक है, ले आओ। मैं शो इट टू आपको मी। सेंड कर टेक अ दूं? पिक्चर, टेक अ पिक्चर। आर यू हम्म। ऑन टेलीग्राम बाय एनी या। चांस? नो नो। सो क्रिएट अ अकाउंट इन टेलीग्राम। ओके, उसके लिए आई फिक्स माय एप्पल आईडी बिकॉज माय ओके, एप्पल आईडी में प्रॉब्लम है, सो आई कांट डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम द ऐप स्टोर। शाबाश।
तो मैं उसको आज नया कोई बनाऊंगा। नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप में से सारी वर्कशीट गुम हो जाती है। टेलीग्राम में इट हम्म। रिमेन्स कंजर्व्ड। यस। और मेक अ पीडीएफ और अ जेपीजी एंड सेंड इट टू मी ऑन मेल। ओके। सेव्ड रहता है ना वो ईमेल तो। व्हाट्सएप उड़ हम्म जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं कोई व्हाट्सएप सेव नहीं करता। हम्म। तो मैं आपको मेल पे भेज देता हूँ। I'll scan it and send it on. I'm just scanning it and sending it. यू हैव सेंड मी द शीट। Yes, I'm just sending. Scan ओके, नो करने में प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम टाइम। लग रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात। पिक्चर खींचो, हम्म। आराम से भेजो। I'm making sure it's clear. हाँ वो एक अडोबे स्कैन आता है। आई जनरली Hmm. कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ। अडोबे Okay, स्कैन I'll है do ना। that. Yeah. अडोबे स्कैन, आई डोंट नो यू हैव इट और नॉट। I have cam scanner, so मैं हाँ उससे एक ही convert बात है। कर सकता हूँ. Almost done. ओके।
Okay, अभी नहीं आया. Yes, I'm done. Okay, let me see. Uncle, what's your email, uncle? Mine is Rohit71 Gera Hmm. @yahoo.com. Okay. Rohit 71. I think you had sent me Gera. earlier also. Yes, yes. वो पापा के फोन से था. अच्छा, ईमेल तो तुम्हारा ही था. अकाउंट. Yes, हाँ जी. Papa has my. I put my email into his account, no? अच्छा. Into his phone, to his 71. You sent Gera. from Gmail, right? Yes. देखो मेरी ईमेल आई. I'm checking. I'm opening my Gmail. Or take a picture, send it to me on WhatsApp. I will save it. Paste it Okay. somewhere. वो आता रहेगा. Okay. Shall I send it as a PDF on your No, WhatsApp anything. then? As a JPG or PDF, whatever. It's okay. Okay. Mm, share. Yes, I sent it. Hmm. On WhatsApp. Yes. And I got your email, uncle. Just. Okay. Find the coordinates of the line where the line, okay, crosses. Okay. I can see the questions. Hmm. ठीक है. इसमें कौन सा नहीं आता? Okay. Which one? ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. Yes. स्कूल में करा दिए होंगे एक बार. हाँ जी हाँ. Okay. Which question is bothering you? Um, अभी तो I haven't started doing the You have worksheet. not I have to started. do Okay. it. So do one thing. Hmm. Start them up. Mark your. Hmm. 6 ही तो क्वेश्चन है टोटल. Yeah. 6 क्वेश्चन है टोटल. हाँ जी. ठीक है. Let's do one thing. Let's start with the first one. Hmm. Okay. कुछ मैं समझा देता हूँ. Hmm. So that you don't start with this. इस इसका कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया, बट मे बी योर क्लास टीचर हैज ऑलरेडी डन इट, सो आई एम अज्यूमिंग समझ आ जाएगा अगर मैं दोबारा बोलूंगा उसको. ओके. Hmm. Read it carefully and then I will explain you if you're not able to do. Read it carefully and It's then we will अभी discuss. it's not load नहीं हुआ है अभी. अच्छा ठीक है. नहीं. नहीं. अच्छा रुको. I am on page number 3 by the way. Okay. Got. ठीक है. So there is a line which is given to you. Hmm. This one. You have to tell where does it cross y axis. So maybe it is like this at, you know, So y +7 how did you do this? Tell me your steps. because So you said y equals mx plus c. So mx is the gradient and c is the y-intercept. m is the gradient and c is the Y-intercept. is the Y-intercept. yes. Good. So you put Hmm. for wherever it crosses x axis, x should be 0. Hmm. On y axis, x is 0. Yes.
So you put x is equal to 0 and therefore y is equal to 7. 0,7. So the answer is the coordinate of the point where it intersects is 0,7. Correct. 7. Okay. Second part, Y equals where to the minus. so this point y is equal to 2 Hmm. lies on this. Okay. It's on the line. So you can put the value of y is equal to 2 in this equation. So 2 equals to 2 is equal to 3x plus 7. 3x is equal to 5. Yeah. Right. ठीक है? Yeah, got it. सही है. Hmm. Simple, right? This is Yes. straightforward. How do you rotate as how do you rotate it? Rotate. इसमें क्योंकि वो मेरे को जो आया है ना Hmm. उसमें वो ऐसे उल ऐसे टेढ़ा आया. हाँ मतलब ऐसे आया है. ओके नो ओ प्रॉब्लम. हाँ. सेम क्वेश्चन. Hmm. अच्छा नहीं इसका बी पार्ट है. क्रॉसेस नो इट्स अ बी पार्ट. सॉरी इट्स अ बी पार्ट. ओके नो वरीज. इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन. It's a separate one. Hmm. Try this. Hmm. Is point B. So first you'll find the midpoint. Hmm. You know So how to which find is the the, midpoint. yeah, x1 plus x2 by 2 by 2 y1 ठीक plus है. y2 by 2. तो step number one, because it's a perpendicular bisector. What is a Hmm. perpendicular bisector? If there is a line, Hmm. the perpendicular bisector divides it into two equal parts. It touches the Hmm. midpoint. So if this is your That's my L1 midpoint. Yeah. and this is a perpendicular bisector, then this point is the midpoint of Hmm. L1. Yes. एंड L1 के जो दो पॉइंट्स हैं वो है A और B. मतलब -5,8 1,-2. This is perpendicular. So these two parts are equal. करो solve. And you have to find the Midpoint. equation of Mid. perpendicular bisector. इसकी equation क्या Hmm. है? Equation of this line called as perpendicular bisector. Midpoint. So midpoint will be -5 plus 1 by 2 comma 8 plus -2. Equal to -4 by 2 comma 6 by 2, which is going to be -2 comma 3. Just x2 y2 once. अंकल हम्म. अब मिड पॉइंट ले लिया मैंने नाउ. ठीक है. So हम्म. you understand right that ये मिड हम्म. पॉइंट है. क्या हम्म. डायग्राम में और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है?
Hmm. Gradient. Yes. Can we Okay. say from the diagram? Can we say Hmm. from the diagram that gradient of AB अगर Hmm. M1 है Hmm. और gradient of perpendicular bisector M2 है तो M1 M2 is equal to -1. Yes. तो क्या मैं ग्रेडियंट Yes. ऑफ M1 निकाल सकता हूँ लाइन वन का? दिस इज Yes. लाइन वन. Yes. लेट्स कैलकुलेट M1. Hmm. M1 will be -2 Do minus it. 8. राइट. Okay. I will मुझे write. ये निकालनी है. ये इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. Hmm. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है. किसी भी Hmm. लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? उसकी ग्रेडियंट Hmm. और उसके ऊपर एक पॉइंट. उसके ऊपर जो Okay. पॉइंट है वो तो ढूंढ लिया मैंने, ये वाला. Hmm. ये जो मिड पॉइंट ए बी का है वो Hmm. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी है. Hmm. तो पॉइंट तो ढूंढ लिया मैंने, लेकिन मुझे ना अभी इसका ग्रेडियंट नहीं पता. तो मैंने सोचा यार ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ. Hmm. M1, पहले M1 निकाल लेता Hmm. हूँ, M1 की हेल्प Hmm. से M2 निकाल लूंगा. तो मुझे Hmm. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट भी पता चल जाएगा. अगर एक लाइन का मुझे पॉइंट मालूम है Hmm. और उसका ग्रेडियंट भी मालूम है तो लाइन की इक्वेशन लिखना 1 सेकंड का काम है. Yes. तो मैंने पॉइंट तो ढूंढ लिया. सो -2, 3 लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल्सो. Hmm. कॉमन है ना, टच कर रहे हैं दोनों. Yes. ठीक है, ये Hmm. एक तो ये लिख दिया. पर ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी भी नहीं पता था. उसके लिए Hmm. मैं यूज कर रहा हूँ M2 निकालना है मुझे. M1 Hmm. लिखो. सो राइट M1 विच इज ग्रेडियंट ऑफ AB. M1 equals to -2 minus 8 दैट इज करेक्ट. by 1 minus 5. 1 माइनस -5. Yes. 5, which equals to -10 by 6. Yeah, which is -5 by 3. राइट. बट दिस Hmm. इज अ ग्रेडियंट ऑफ AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो निकालना है ना. Hmm. तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. M1 की वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं. Hmm. डालो. Putting the values here. M2 is unknown. Hmm. So -5/3 multiply by M2, which is unknown, is equal to Hmm. -1. Minus gets Yes. cancelled. So Hmm. M2 is equal to. 3 by 5. So now I know the slope or gradient of this also. Hmm. I know a point on it Hmm. and I know its slope. Now, what is the equation of a line whose slope is known and you know a point on it? Hmm. So How do you y write? equals mx plus c. No, that is this form. You should know the gradient, which you do, but Hmm. you don't know y-intercept, na? Yeah. So you can't use this. You Hmm. know a point on the line x1 Hmm. comma y1 and you know the gradient. Hmm. So the form you have to use is y minus y1 Hmm. upon x minus x1 is equal to m1. Hmm. If you know a point on the line and the Hmm. gradient of the line, then you Yes. use this one. You can Okay. only use this if you know the Hmm. gradient and intercept. Intercept तो निकाला नहीं ना. Hmm. निकालो तो point है. Yes. Point on the line is x1 y1. Gradient is 3/5. Put the value here. इस equation में. This is the concept X1. you have to use. So it'll be 3 minus No, y 3 is minus. y. Y is Hmm. the general y, any point on the line. It will Hmm. be y minus 3. Hmm. Y1 is By, this. okay, by X x minus minus 5. -2. ग्रेडियंट कितना निकाला इसका अभी 2 सेकंड पहले? 3/, 3 by 5. परपेंडिकुलर की कंडीशन से.
Hmm. Cross multiply. Oh Y yeah, correct. minus 3 upon Hmm. x plus 2 is Hmm. equal to 3 by 5. Hmm. 5y minus 15 is equal to Equal 3x plus plus six. 6. Hmm. 5y minus Hmm. 3x is equal to 21. Or if you want to write it properly, Hmm. 5y is equal to 21 plus 3x. Y is equal to 21 by 5 plus 3x by 5. So y is equal to mx plus c. Oh yes. Okay, now let me ask you a question. There is a line having a Hmm. point 2 comma 2 on it. Hmm. There is a line which is something like this. A point Hmm. 2 comma 2 lies on it. Hmm. Sorry, ये कहाँ से निकल गया? So I'll just draw the coordinate axis, okay? Hmm. So you know the line and you know the point on it. Okay. Hmm. Now the line's gradient is also known to you to be 1. Hmm. Hmm. Find the equation of the line. You know a point on Hmm. the line and you know the Hmm. gradient of the line. Find the equation. Hmm. Find the equation of a line that has 2 comma 2 as a point on it and its slope is 1. Hmm. So I just told you the method. This is the method. This point is on the line hmm. and y minus y1 is equal to Oh, the so it'll be gradient. y Likho, likho, minus likho, likho. two. Don't say, Okay, write it down, please. got it. This is not an English test Yes. speaking. This is a maths test we're supposed to write. So y minus 2 upon x minus 2 is equal to One gradient. by one. Khatam. Hmm. Cross So now multiply you just cross multiplied, which is that. y minus 2 only. Y minus 2 equals to x minus 2. Yes. Cancel. Cut. Y So is equal to, y equal to x. right, answer. So if you know a point on the line and its slope or the Hmm. gradient, the formula Hmm. is y minus y1 upon x minus x1 is equal Hmm. to the grade. So this expression is also actually the gradient. What you're doing is you're Hmm. taking a point here on the line called as x comma y. Yes. So you I'm have just two writing points this on the line. down. You have 2 points on the line. One is called as Okay. x comma y. Hmm. So and you're applying the rule of y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is a general point on the line Okay. y, right? So you're writing y minus 2 upon x minus 2, your standard gradient formula, and then Yes. you know the gradient, so you put it equal to. Okay. I'm just writing this down 1 minute. Yes. Any doubts? No, not now. So what you have to do, you have to solve the balance questions and come back with your Okay. doubts. Okay. I will send you the link and you can, if you want to see any particular part of the class, you can see. Hmm. Okay. Any particular question you think you were not clear or you would like to re-see it, you can see it. Hmm. Okay. ठीक है? ठीक है. आज के लिए काफी है. Yes, yes, तो yes. जाके So बाकी now, please do the rest of the worksheet. Come back with hmm. your doubts on the worksheet or Okay. any question from any of the topics you have done in the class. Okay.
ठीक है, अभी तो वर्कशीट पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, लेट्स नॉट ट्राई टू डू टू मच, पहले अपनी वर्कशीट को क्लियर कर लो। यस। ठीक है, आई होप दिस वाज अ ग्रेट यस। लर्निंग एक्सपीरियंस। यस यस, दिस वाज अ वेरी प्रोडक्टिव क्लास। मजा आया ना कि वो रूल पता चल गए हम्म। जो या थोड़े बेसिक्स बहुत, वाले। हाँ बहुत सब कुछ समझ आया। ठीक है, हम्म। सी यू देन, बाय।